4 న్యూస్ కి స్వాగతం. శ్రీహరికోట నుండి ఈ రోజు ప్రయోగించిన జిఎస్ఎల్వి F-15 రాకెట్ ద్వారా ఎన్విఎస్ సురన్న-2 ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా అంతరిక్ష కక్షలోకి చేర్చడం జరిగింది. ప్రయోగం జరిగిన 19 నిమిషాల 10 సెకండ్ల తర్వాత ఉపగ్రహం కక్షలోకి చేరుకోవడం జరిగింది. ఈ ఉపగ్రహం 10 ఏళ్ల పాటు అంతరిక్షం నుండి సేవలు అందిస్తుంది. ఇది ఇస్రో ప్రయోగించిన 100వ రాకెట్ కావడంతో ఈ ప్రయోగానికి ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 0. stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSLV tracking. F-15 NVS-02 mission. 100th Speed launch tracking. mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य सफलतापूर्ण उत्थापन जीएसएलवी F-15 रॉकेट का चारों L-40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं. An eastward mission launched at 106 degrees azimuth. Plus 40 seconds. GSLV core S-139 and the 4 L-40 strap-ons thrusting simultaneously. Cumulative thrust is 7,535 kilonewtons. प्रथम चरण में कोर बूस्टर है Just 1 minute. जो कि Sharvan ठोस नोदक पर आधारित है. कोर Sharp to बूस्टर Minato. का प्रज्वलन काल लगभग 111 सेकंड का है. इसके पश्चात भी L-40 जो स्ट्रपॉन बूस्टर्स हैं उनका प्रज्वलन लगभग 50 सेकंड और आगे चलेगा. इस तरह लगभग 150 सेकंड्स पर प्रथम चरण का प्रज्वलन काल समाप्त होगा. Action time for the core solid motor is 112 seconds and that of the strap-ons is 149 seconds. HTPB based propellant in S-139 and L-40s are powered by turbopump-fed Vikas engine based on earth storable propellant. Shar ground station acquiring the trajectory data. S-139 stage ban out. कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है. Plus 2 minutes. स्टेपॉन बूस्टर अभी भी प्रज्वलित हैं. इस दौरान यह लगभग 3000 किलो First न्यूटन का stage प्रणोद उत्पन्न कर रहे performance हैं. normal. कुछ ही क्षणों में L-40 स्टेपॉन बूस्टर्स बंद हो जाएंगे और GS-2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा. L-40 stages thrust cut off. Second stage ignited. First stage separated. Interstage separated. Closed loop guidance initiated. Current altitude is 81 kilometers. We are 169 seconds into the flight. Second stage performance normal. जी हाँ, जैसा आपने सुना, प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. यह लगभग 141 सेकंड का प्रज्वलन काल है. इस दौरान यह लगभग 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. Also known as the GL40HT, the second stage operates on UH-25 NN204. High thrust Vikas engine develops 846 performance kilonewton normal. thrust in vacuum. Burn time of GS2 for the present mission is 141 seconds. Shar and Port Blair stations currently tracking. द्वितीय चरण का प्रज्वलन जारी है.
इसमें हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल होता है। Payload fairing Plus 4 separated. minutes. Shielding of the spacecraft from atmosphere is no longer necessary. The current altitude is more than Second 100 stage kilometers. performance The normal. payload fairing has been separated. Shar and Port Blair ground stations continue to track. पूर्व निर्धारित तरीके से 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने के पश्चात ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाता है।